हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एटी एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 50 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रीजन के लिए है। डिटेल वीडियो ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो 50 नंबर टेस्ट के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। एनटीए मॉक टेस्ट के सारे PDF अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बायो से, देन आएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के भी टाइम बाय स्टाफ दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप सीधे जंप कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो पे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द कॉलम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो यहाँ पे इसका आंसर बी है, तो यहाँ पे मैच करके रीड कर लेते हैं। ये है क्रिस्टा यानी कि सेकेंड इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। बी सिस्टर्नी, थर्ड मतलब डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी एपरेटस। बी थर्ड हो गया। सी का है थैलेक्वाइड का फर्स्ट यानी फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन chloroplast. The inner membrane of mitochondria is folded into finger-like projections called crista. It increases the surface area for attachment of oxysomes. Golgi bodies are made up of flat disc-like structure, filled one on the top of the other, known as cisternae, which gets curved, forming cis and transphase. Thylakoids are flat sac that is piled one on the top of other, forming bundles known as granum. Question number second, common liverwort or umbrella liverwort is a common name for answer A, Mercantia. Asexual reproduction in some liverwort like Mercantia takes place by the formation of specialized structures called gamma cups. Gamma are green multicellular asexual buds which develop in a small receptors called gamma cups located on thalli. They are also called as common liverwort or umbrella liverwort. Question number third, which other form structure is the normal human heart degenerates human heart generates action potential to the initiate a cardiac cycle? Answer B, SA node. Okay, question number 4, find the appropriate option which justifies all these statements. First, protect the cell by acting as a barrier. Second, regulates the transport of substances in and out of the cell. Third, receives chemical messengers from other cells. And four, act as a receptor. And last, fifth, cell mobility, excretions and absorption of substances. Answer C, plasma membrane. Okay, next question number fifth, read the following statements A to D. A, coronary artery disease is also called atherosclerosis that affects the vessels that supply blood to the heart muscle. B, electrocardiograph machine is used to obtain an electrocardiogram ECG on graph paper. C, during a cardiac cycle the right ventricle pumps out about 70 ml of oxygenated blood, which is called a stroke volume. And D, the second heart sound is associated with the closure of semilunar valves. How many statements above are incorrect? Answers B, only one option is incorrect. The right side of human heart contain deoxygenated blood and left side of human heart contain oxygenated blood. So in each cardiac cycle, the right ventricle pumps out about 70 ml deoxygenated blood, while left ventricle pumps out 70 ml oxygenated blood to the respective blood vessel. सो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज नॉट अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड, द सेल साइकिल इज नॉट अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। थर्ड, सिंथेसिस फेज सिंथेसाइज सेल ऑर्गेनेल ओनली। एंड फोर, इंटरफेज इज नॉट मेटाबॉलिक इनएक्टिव। आंसर बी, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। मतलब कि द सेल साइकिल इज नॉट अ जेनेटिकली कंट्रोल गलत है, और सिंथेसिस को फेज सिंथेसाइज सेल ऑर्गेनेल्स ओनली गलत है। और फर्स्ट और फोर्थ जो हमारा सही है, द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज नॉट अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस और इंटरफेज इज नॉट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस? ओके, आंसर डी, CO2 रिमूवल जो होता है 0.9 to 1 kg पर डे पर ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर? आंसर बी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास फिक्स होते हैं और न्यूक्लियस में जो होते हैं वो फ्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन? आंसर बी, ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड होते हैं वो हमारे ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा लेयर। ओके, next question number 10, how many centromeres are present in a
bivalent, and how many bivalents are present in diploid cell of human females respectively? Answer C 2 and 23. Next question number 11. The total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration is called. Answer A. Total lung capacity is TLC. Okay. Question number 12. Macromolecule chitin is. Answer A. Nitrogen containing polysaccharide which is homopolymer. This is our explanation. Next question number 13. Residual air mostly occurs in. Answer A. Alveoli. This is explanation. Question number 14. Based on different functional R groups, the following amino acids are formed. Select the correct amino acid according to different functional group. Answer D. ऑल द एबो RH ग्लाइसिन RCH3 जो है वो होगा एलानिन, और R की जगह पर CH2 हो जाएगा और सेरीन होंगे। NCERT का सारा डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ही हेल्प डिस्कवर इवोल्यूशन एंड देन बिकेम एक्सटिंक्ट, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू। आंसर ए. वैलेस। क्वेश्चन नंबर 16. मैथ्स द कॉलम यहाँ पे है। ए का सेकेंड यानी कि ऑरिजिन ऑफ द अर्थ है वो हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। बी का थर्ड यानी कि ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जो है वो है थर्ड 20 बिलियन ईयर्स एगो। ए का सेकेंड यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स एगो थे। और सी का फोर यानी ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म जो होगा वो 4 होगा यानी 2 बिलियन एगो वो। और डी का 1 यानी कि ऑरिजिन ऑफ फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म का 1 यानी 3 बिलियन ईयर्स एगो होंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Select the incorrect statement from the following. Answer A. Active enzyme has tertiary structure having many active sites, substrate binding sites. This is our explanation. Next question number 18. In a random mating population in equilibrium, which of the following brings about a change in gene frequency in a non-directional manner? Answer C. Random drift. Okay. Next question number 19. In a dorsiventral leaf, the location of palisade tissue and phloem is respectively. Answer B. Adaxial and abaxial. और जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 20. Read the following four statement 1 to 4 and how many statements are correct from the above. आंसर यहाँ पे जो है वो डी है यानी 2। ओके। यहाँ पे फर्स्ट कर रहा है ऑल मैमल्स एक्सक्लूसिवली इंस्पायर बाय यूजिंग लंग्स एक्सेप्ट Balanopetra. Second, and apes in apes the skin is dry without any glands except the sudorific gland at the base of the tail. Third, chameleon is a camouflaged lizard with a prehensile tail. And fourth, amphibia is the only tetrapod vertebra which has external fertilization with indirect development. तो यहाँ पे फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और थर्ड और फोर्थ जो है वो सही स्टेटमेंट है। ओके, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर होगा। ऑल मैमल्स exclusively inspired by using lungs without any exception. Sudorific gland is the another name of sweat gland which is present in mammals but not in apes. Skin is dry without any glands except the bile glands at the base of tail in apes. Question number 21. In Dicotour, the vascular cambium is. Answer C. Completely secondary in origin. Question number 22. Find the correct match in the following structure phylum function. Answer C. Parapodia in Annelida swimming में help करता है। Question number 23. Which of the following are the structure characters of an ecosystem? Dominance, species, composition, stratification, nutrient cycle, food web complexity, productivity. Answer A. Dominance, species, composition, stratification. Okay. Question number 24. Sound becomes hazardous noise pollution at level. Answer B. Above 80 decibel. Okay. Question number 25. The hormone of the thymus gland which hastens the attainment of sexual maturity is. Answer D. All of these, and thymosin, thymopoietin, or thymoline. Next, question number 26. Which one of the following pair is incorrectly matched? Answer D. Trichoderma non बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये हमारा गलत है, बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। और ए बी सी सारे सही हैं। राज्यों में रूट नोडुल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, एक्लोवायरस, न्यूक्लियर वायरस, लेडी बर्ड बीटल्स, एफिड्स कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स, डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो एंड डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा आर फेमस फॉर देयर वर्क ऑन। आंसर ए. टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF टेक्निक। ओके। Next question number 28. During sewage treatment, which group of microbes are used to reduce BOD of sewage water? Answer C. Heterotrophic aerobic. This is our explanation. Next question number 29. What is the final stage of sperm maturation known as? Answer A. Capacitation.
Next question number 30. When solute is mixed in solution, the water potential of the solution, answer B, decreases. This is explanation. क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल करके रीड कर लेते हैं. द आंसर सी यहाँ पे है, द सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस विच आर प्रेजेंट इन साइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस सिंथेसाइज एंड सीक्रेट्स इनहिबिन hormone, inhibin B hormones. Okay, this is our explanation. Next question number 32. During biological nitrogen fixation, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by, answer D, leg hemoglobin. This is explanation. Question number 33. Which of the following layer of uterus exhibits a strong contraction during delivery of the baby? Answer B, myometrium. क्वेश्चन नंबर 34. ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली क्या होगा, यहाँ पे तो रीड कर लेते हैं. बायोलॉजिकल नेम जो ए में होगा वो मैन का होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई जो का होता है बायोलॉजिकल नेम वो मस्का डोमेस्टिका, और मैंगीफेरा इंडिका जो होता है वो होता है सी यानी कि मैंगो का. और यहाँ पे वीट का ट्रिकम एस्टिवम होते हैं. जीनस मैन का होमो, हाउस फ्लाई का मस्का, और मैंगीफेरा होते हैं मैंगो के, और वीट का होता है ट्रिटिकम. फैमिली होमिनिडा होता है मैन का होमिनिडी, और हाउस फ्लाई का होता है यहाँ पे जो बी ऑप्शन है मस्कीडा या मस्कीडी, और यहाँ एनाकार्डियसी होता है मैंगो के, और वीट के होते हैं यहाँ पे पोएसी फैमिली. ये हमारा एनसीईआरटी का सारा पॉइंट था टेबल. ओके, क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ ब्लास्टोसिस्ट acts as a precursor of the embryo? Answer B, inner cell mass. Next, question number 36. In Wegener's experiment, what did he call the infectious fluid that he extracted from diseased tobacco plants? Answer B, Contagium vibum fluidum. Okay, question number 37. In which of the following bacterial diseases intestinal perforation and death occur in severe cases? Answer C, typhoid. Next, question number 38. How of the following fungi given in the list are known to grow on moist decaying wood? Rhizopus, aspergillus, trichoderma, stelago, albugo, Alternaria, mucor, agaricus. Answer ये होगा 3. यहाँ पे जो albugo, rhizopus and mucor are members of Phycomycetes, are found in aquatic habitats and on decaying wood in the moist temperatures or as obligate parasite on plants. 39. Which of the following is not correctly matched? Answer B, mucosa associated antibody. AGM गलत है, बाकी A, C, D हमारा सही है. Primary lymphoid organ thymus, vaccination, artificial immunity, और reservoirs of erythrocyte, spleen. Okay, primary lymphoid organs include bone marrow and thymus. The antibodies which are associated with the mucosal layer is IgA antibody. Question number 40. Which of the following statement is incorrect? Answer यहाँ C है. Constant environment does not promote नीचे स्पेशलाइजेशन, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी और डी जो सही है. स्पेसिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम. ट्रॉपिकल environment लाइक टेम्परेट ones are less seasonal, और डी है there is more solar energy available in tropics. Greater biological diversity in tropics is due to long evolutionary time for species diversification. Tropical environment unlike temperate ones are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment promote niche specialization and lead to greater species diversity. Okay, तो यहाँ पे does not नहीं होगा, constant environment जो है वो promote करता है नीचे specialization को. क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ मैच करना है, तो यहाँ पे आंसर ए है. फर्स्ट का 4 यानी इंडोल एसिटिक एसिड का 4 यानी राइपनिंग ऑफ फ्रूट. सेकेंड का ए बी ए यानी कि थर्ड होगा यहाँ पे स्टोमेटल क्लोजर. थर्ड का 5th यानी इथालीन का राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. 4 का सेकेंड यानी कि जिब्रेलिक एसिड का सेकेंड यानी बॉल्टिंग. 5th का 1 साइटोकाइनिन का हेरिंग स्पर्म डीएनए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. आंसर यहाँ पर डी होगा. इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स होमोथैलिक एंड मोनोसिस आर यूज्ड टू डिनोट यूनिसेक्सुअल कंडीशन. ओके, ये हमारा गलत है, बाकी ए बी सी सही है. इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स मे बी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल, इट इज मोनोसियस. बी यहाँ पे मोनोसिस प्लांट्स आर कुकुरबिटा एंड कोकोनट. सी डायसिस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम. ओके, monocyte term is used for the plant in both male and female flowers are produced on the same plant. Dioecious term is used when male and female flowers are produced on different plants. In several fungi and plants, homothallic and monoecious condition is used to denote bisexual condition, and heterothallic and dioecious is used to denote unisexual condition. Okay, इसलिए हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 43.
E. coli cells with a mutated Z gene of the lac operand cannot grow in medium containing only lactose as a sucrose as a source of energy because answer B, they cannot synthesize functional beta galactosidase. Okay, next question number 44. After transcription, which of the following is added to the 3' end of the eukaryotic mRNA? Answer C, poly A tail. Next question number 45. Select the incorrect statement from the following. Answer C, introns or intervening sequences appears in mature or processed RNA. Question number 46. Which of the following is incorrect about the experiment performed by T.W. Angelman? आंसर सी जो इनकरेक्ट है, बैक्टीरिया एकोमोडेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ऑरेंज एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लाइटोस्ट्रेटम, ये हमारा गलत है। बाकी ए, बी और डी सही है। क्लेडोफोरा अ ग्रीन एल्गी इज यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। बी, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इज यूज्ड। प्रिज्म वाज यूज्ड टू स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो है बैक्टीरिया वेयर यूज्ड टू डिटेक्ट साइज में जो बैक्टीरिया को में से मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट होते हैं, ऑरेंज और ग्रीन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. What is the process that creates proton gradient across thylakoid membrane? Answer D, all of the above process, यानी कि splitting of water molecules on inner side of membrane towards lumen. H plus carry transports H plus ion from stroma to lumen. And C, NADH reductase removes H plus ions from stroma for reduction of NADP plus. Okay. क्वेश्चन नंबर 48 भी यहाँ पे मैच इन द कॉलम है, यहाँ पे आंसर बी है। ए का 3 यानी NADH डिहाइड्रोजिनेज जो होगा वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का होगा। बी का सेकंड यानी साइटोक्रोम BC1 का होगा 2 यानी कि कॉम्प्लेक्स थर्ड। सी का 1 यानी कि साइटोक्रोम A3 जो होंगे वो होंगे 1 यानी कॉम्प्लेक्स 4। और ATP सिंथेज जो होते हैं वो 4 होंगे, आंसर कॉम्प्लेक्स 5 होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है हमारा, जरूर याद रखें। 1 2 3 4 सारे कॉम्प्लेक्स याद रखें, 4 5 सारे, ये हमेशा पूछता है क्वेश्चन और रिपीट भी कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 49. इन द गिवन क्वेश्चन बिलो आइडेंटिफाई द कंपाउंड व्हिच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड कैलकुलेट द आरक्यू ऑफ द सेम। ओके, तो आंसर यहाँ पे जो होगा वो बी होगा। ट्राईपाल्मेटिन आरक्यू इक्वल टू होता है 0.7। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ट्राईपाल्मेटिन का पूछ चुका है, आरक्यू कितना होता है। ओके, तो ये इसे याद रखें। ओके, एनसीईआरटी का ये सब डायरेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. Bagging of emasculated flowers is carried out using answer C, bags made of butter paper, ये हमारा जो है सही है, ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 51. इन द एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकोट एंड मोनोकोट टू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर, आंसर होगा डी, कॉर्टिलोडोन एंड स्पुटेलम, ये रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. Which structure of synergid attracts pollen tube towards itself by secreting chemotropic substance? Answer B, filiform apparatus. 53. Which of the following is a marine water pollinated plant? Answer D, Zostera. Question 54. The aperture present in pollen grain is called germ pore where? Answer C, only exine is absent. This is our explanation. Question number 55. Which of the following drugs cannot be used clinically to help the patient cope with depression and insomnia? Answer D, cocaine. Okay. Question number 56. Klinefelter syndrome can be easily identified by? Answer B, karyotype. Question number 57. During translation initiation in prokaryotes, a GTP molecule is needed in? Answer D, association of 30S mRNA with formyl met tRNA. 58. If PBR332 cloning vector is cut by PBU, first enzyme for the formation of rDNA, then which of its marker gene helps in the selection of recombinants? Answer D, both A and B, मतलब कि ampicillin resistance genes और tetracycline resistance gene. Okay. Question 59. A person having genotype IAIB would show the blood group as AB. This is because answer B, codominance. क्वेश्चन नंबर 60. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे फिल रीड कर लेते हैं। आंसर हमारा बी है। इन सिकल सेल एनीमिया द डिफेक्ट इज काज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लू बाय सेकेंड वैलिन इन द थर्ड सिक्स्थ पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ओके, ये भी हमेशा पूछ रहता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 61. What will be the distribution of phenotypic features in the
First filial generation of if a cross is carried out between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus. Answer D, both A and C, and this is explanation. 62 जो है यहाँ पे which of the following is true for disease in families A and B. Answer is D, in family A both the parents are heterozygous for autosomal recessive disorder. Okay, next 63 how many of the following belong to kingdom Pterophyta? Coleotum, Selaginella, Ebusetum, Pteris, Pinus, Funaria, Sphagnum, Cycas, Sedientum. Answer D होगा यहाँ. Answer B 5. Coleotum is the simplest and most primitive Pterophyta. Selaginella is a member of Lycosuita of Pterophyta. Ebusetum is a Pterophyta of class Sphenopsida. Pteris and Sedientum are Pterophyta of class Pteripsida. Funaria and Sphagnum are bryophytes. Pinus and Cycas are gymnosperm. Question number 64. Which of the following is not a basidiomycetes? Answer C. Aspergillus. This is explanation. Aspergillus is a member of Ascomycetes. Question number 65. Genetic material of tobacco mosaic virus is answer B. Single-stranded RNA. 66. Bacterium divides every 35 minutes. If a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown by 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? Answer C. 32 to 10 to the power 5 cells. 67. Which of the following statements above about ozone are not true? यहाँ पे ए है ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, बी ओजोन इज गुड इन ट्रोपोस्फेयर एंड बैड इन स्ट्रेटोस्फेयर, सी ओजोन डिप्लीशन इज मैक्सिमम नियर पोल्स. आंसर हमारा जो है वो सी है. ओनली बी जो है हमारा वो सही नहीं है. ओजोन इज गुड इन द ट्रोपोस्फेयर नहीं होता है. ओजोन जो होता है ट्रोपोस्फेयर में बैड होता है. बाकी सारे सही हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. Which of the following are correctly matched? Arsenic poisoning, black foot disease, secondary effluent treatment, biological process, pyrolysis, solid waste disposal, solid waste disposal, TB effects, water pollution indicator, biomagnification, degradable pollutants. आंसर हमारा डी है. 1 2 3 4 सारे जो है हमारा करेक्टली मैच्ड हैं. नेक्स्ट 69. Chernobyl and 3 Mile Island are related with which of the following? Answer C. Radioactive pollution. Question number 70. Which of the following characters are common in plants like Indigofera, Sesbania, groundnut and gram? सारे फेबेसी के हैं. ऐसे हमारा डी है. बोथ ए एंड बी. सो जागोमॉर्फिक फ्लावर्स एंड बिलोंग टू फैमिली फेबेसी. Question number 71. When ovules are born on the central axis and septa are absent in the dianthus and primrose, the placentation is answer C. Free central. और इसका हमने ट्रिक बना रखा सारे प्लासेंटेशन का. आप हमारे वीडियोज पे देख सकते हैं. प्लासेंटेशन ट्रिक्स लिखकर नीचे इनिशिएटिव बायोलॉजी लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सारे ट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 72. Which of the following floral characteristics is not seen in the floral diagram? Answer D. Position of ovary. Question number 73. Find the correct match. Answer C. पोटैटो में जो कैलोरीज होता है 5 नंबर में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. Adaptation is an attribute of the organisms, morphological, physiological and behavioral, that enables the organism to answer C. Survive and reproduce in its habitat. Okay. Question 75. What does R in E core R first represent? Answer D. Strain RY13. Okay. Question number 76. Which of the following acts as a natural scavenger? Answer D. Microorganisms. Next question number 77. Which of the following matches is correct for enzyme used to extract DNA? Answer D. More than one option is correct. Okay. प्लांट सेल के लिए सेलुलोज, फंगस के लिए काइटिनेज और बैक्टीरिया के लाइसोजाइम सारे यूज करते हैं. ओके. Question number 78. Which of the following will be done with a product formed by RDNA technology? Answer D. All of the above. Product has to be formulated with a suitable preservation. Formulation has to undergo clinical trials. Strict quality control testing is done. Okay. Question number 79. Golden rice is answer C. Transgenic rice having the gene for beta carotene. 80 number. Which of the following is true about RNAi process? Answer D. All are true. It is a method of cellular difference. It involves silencing of a specific mRNA due to complementary dsRNA molecule. C. The source of complementary RNA is
in this process may be infection by viruses having RNA genomes. Okay. Question number 81. Which tissue forms the supporting framework for epithelium? Answer C. Areolar tissue. Next. Question number 82. In Periplaneta americana, the number of Malpighian tubules are, answer C, 100 to 150. Question number 83. Which of the following is incorrect about the skeletal muscle? Answer C. Voluntary nature. This is explanation. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी वॉलंटरी नेचर नहीं होते हैं, बाकी नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ CNS, दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन, पॉजिटिव स्ट्रिप्ट एपिडेंस, ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 84, स्टेटमेंट ए यहाँ पे कहा द ह्यूमन स्कल इज मोनोकोंडालिक, ये गलत है। स्टेटमेंट बी कह रहा है रिब्स इन ह्यूमंस आर बाइसेफेलिक, ये सही है। इसमें आंसर हमारा होगा बी, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट है। ओके, ह्यूमन स्कल जो होते हैं वो डाइकोंडालिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, न्यूरॉन्स फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर, आंसर डी, नॉन माइलिनेटेड एंड मल्टीपोलर। ओके, question number 86, which of the following correctly defines the components of the peripheral neural system? Answer B, somatic neural system plus autonomic neural system. Question number 87, which hormone is inhibited by hypothalamic somatostatin? Answer B, GH, growth hormone. Question number 88, select the correct statement. Answer A, pineal gland secretes melatonin. Question number 89, out of the following hormones, how many are secreted by adenohypophysis? Answer will be D, 4 hormones, prolactin, ADH, DH, LH, aldosterone, MSH, melatonin, PTH. ये क्वेश्चन रिपीट है। हार्मोन सेक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफिसिस जो होगा प्रोलैक्टिन होंगे, जीएच होंगे, एलएच होंगे और एमएसएच होंगे। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 90, which part of brain is directly concerned with the control of heart? आंसर डी, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, तो हमारे सारे 90 क्वेश्चन हो गए हैं बायो पे, वीडियो जरूर करना। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे, देन आएंगे फिजिक्स पे। क्वेश्चन नंबर 1 केमिस्ट्री, द मोलैलिटी ऑफ 15% ऑफ 30% वेट बाय 15% by weight solution of H2SO4 is, answer D, 1.8. This is our explanation. Question number 2, in which transformation the change of hybridization and shape about underlined atom takes place? Answer B. Okay, and this is our explanation. Next, question number 3, the binding energy of electron in the lowest orbit of a hydrogen atom is 13.6 electron volt. The magnitudes energies from 3 lowest orbits of the hydrogen are, answer D, 13.6, 3.4, 1.5 electron volt, and this is our explanation. 4, a sample of milk splits after 60 minutes at 300 Kelvin and after 40 minutes at 400 Kelvin. When the population of Lactobacillus acidophilus in it doubles the activation energy in kilojoule per mole for this process is closest to, given R equal to 8.3 joule mole per mole per Kelvin, ln 2 by 3 equal to 0.4, e to power minus 3 equal to 4.0. Answer is C, 3.98, and this is the explanation. Question number 5, 1 mole of non-ideal gas undergoes a change of state 2 atm 3 liter 25 Kelvin to 4 atm 5 liter 245 Kelvin with a change in internal energy delta E equal to 30 liter atm. The change in enthalpy delta H of the process in liter atm is, answer C, 44.0. This is the explanation. Question number 6, a binary solid A plus B minus has a zinc covalent structure with B minus ions constituting the lattice and A plus ions occupying 25% tetrahedral holds. The formula of solid is, answer C, AB2, and this is our explanation. Question number 7, in which in the following compounds the order of acidity is, answer will be D, 4, then 3, then 1, then 2. This is the explanation. Question number 8, an aqueous solution containing 1 mH of each of U3 plus U2 plus Ag plus Li plus is being electrolyzed by using inert electrodes. The value of a standard potentials are E naught Ag plus Ag equal to 0.80 volt, E naught Cu plus Cu equal to 0.34 volt, and E naught Au3 plus Au equal to 1.50 volt, E naught Li plus Li equal to minus 3.03 volt, which increasing voltage is the sequence of deposition of metals on the cathode will be, answer C, Au, Ag, Cu, and this is our explanation. Question number 9, when 1 liter of CO2 is heated with graphite, the volume of the gases
collected in one is 1.5 liter, equal to the number of moles of CO produced at HTP. Answer C 1 by 22.4. Next question number 10. Which of the following statement is not correct? Answer C. Hybridization state of CO in COX whole thighs 3 minus sp3 d2 is incorrect. बाकी A, B, D हमारे सही हैं. Okay. This is explanation. Question number 11. The Cn minus ion and N2 are isoelectronic, but in contrast to Cn minus N2 is chemically inert because of answer B. Absence of bond polarity. Question number 12. Which of the following types of forces bind together the carbon atoms in diamond? Answer B. Covalent. Question number 13. Which of the following compounds undergoes predominantly SN2 reaction with aqueous NOH in a polar aprotic solvent? Answer B होगा हमारा explanation. Question number 14. Total charge required for the oxidation of 2 moles Mn3O4 into MnO4 minus in presence of alkaline medium is answer C 20 farad. Question number 15. When heated ammonium carbamate decomposes as follows: NH4COO NH2S 2NH3 plus CO2 at a certain temperature, the equilibrium pressure of system is 0.318 atm Kp. For the reaction is answer C 4.76 into 10 power minus 3, and this is our explanation. Next question number 16. Which one of the following ionic species will impart color to an aqueous solution? Answer D Cr3 plus, and this is our explanation. Question number 17. The reaction of S2 bromobutane with OH minus 2 produce R-butanol 2-ol butane 2-ol will be answer C first order in 2 bromobutane and first order in OH minus, and this is our explanation. Question number 18. Calculate elevation in boiling point for 2 molar aqueous solution of glucose given Kb H2O equal to 0.5 kg per mole. Answer will be A 1 degree Celsius. Next question number 19. CH3 CH2 CH2 CH triple one N CH3 CH CN CH3 रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा? आंसर हमारा ए होगा चेन आइसोमर. 20. Which of the compound HCHO first, CH3 CH2 CHO second, CH3 CO CH3 third, and HCO C2H5 4 will give a secondary alcohol on reaction with excess Grignard reagent followed by hydrolysis? Select the correct answer using the codes given below. Answer D second and 4, and this is our explanation. Okay. Question number 21. Solubility of calcium phosphate molecular mass M in water is W gram per 100 ml of 25 degrees Celsius. Its solubility product at 25 degrees Celsius will be approximately answer B 10 to the power 7 W by M to the power 5. Question number 22. Select the correct statement. Answer D all are correct. Langmuir adsorption is highly specific. Van der Waals adsorption is reversible. Both and A and B are exothermic. Question number 23. In the following reactions the major product W is okay. यहाँ पे W निकालना है. यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है NaOH HCl के साथ V बन रहा है. V को रिएक्शन करवा रहा है तो W बन रहा है. आंसर हमारा A यहाँ पे होगा, and this is our explanation. Okay. Next question number 24. Graphitization is applying a coating of आंसर होगा A zinc. Galvanization is a process by applying a protective zinc coating of steel or iron to prevent rusting. Question number 25. When dihydroxyacetone reacts with HiO4, the product is R. Answer C HCHO and CO2, and this is our explanation. Question 26. The hottest region of Bunsen flame shown in the figure below is यहाँ region 1, region 2, region 3, region 4 है. आंसर हमारा C होगा. region 2 के पास hottest होते हैं. Okay. Hottest portion of the flame and lowest temperature June. Okay. Next question number 27. Select incorrect order. तो हमारा A जो है इनकरेक्ट ऑर्डर है. NH3 सबसे ज़्यादा, उसका PS3 ASH3 SPH3. ऑर्डर ऑफ एसिडिक कंसिडर हमारा गलत है. करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कंसिडर जो होगा सबसे ज़्यादा SPH3 देन ASH3 देन PH3 एंड NH3. रेस्ट अदर ऑर्डर्स आर करेक्ट हेयर है, यानी कि B है. सबसे ज़्यादा सल्फर देन सेलेनियम देन टेल्यूरियम देन ऑक्सीजन. ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. यहाँ पे C जो है सिलिकॉन सबसे ज़्यादा क्लोरीन देन फॉस्फोरस देन सल्फर देन सिलिकॉन. ऑर्डर ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी है. और D यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रेडियस है. कैल्शियम 2 प्लस का होगा सबसे कम, उसके बाद होगा K प्लस का Cl माइनस देन H2 माइनस. ओके.
क्वेश्चन नंबर 28, आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगा? आंसर होगा सी इथाइल 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ these is not an acidic salt? Answer A NaH2PO2. Okay. Question number 30, the compressibility factor of a gas is less than unity at HTV, therefore answer B होगा Vm is less than 22.4 liters. Question number 31, in the following AlH2O whole 3 plus HCO3 minus gives AlH2O whole 5 OH2 plus H2CO3. The species behaving as Bronsted Lowry acids are answer A, P और S जो होंगे वो हमारा Bronsted Lowry acids हैं. Question number 32, the intermediate product यहाँ पे this is explanation नहीं रहा. Question number 32, the intermediate product X of the following synthesis is identified as. Okay, आंसर जो हमारा यहाँ पे है X जो होगा ये होगा B आंसर जो हमारा होगा. ओके, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑर्डर. आंसर हमारा B होगा. जो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे यहाँ गलत दिया हुआ है. करेक्ट ऑर्डर जो होगा एच का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एच आई का होगा, देन एच बी या देन एच सी एल. रेस्ट अदर आर करेक्ट एज पर गिवन प्रॉपर्टी. ए सी डी हमारा करेक्ट है. ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल जो होगा एच टू ओ सबसे ज़्यादा, देन एच टू एस, देन एच टू एस सी, देन एच टू टी. ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो सी सी एल फोर का सबसे ज़्यादा, देन बी सी एल थ्री, देन बी सी एल टू, देन एल आई सी एल. और डी जो है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सी एफ टू का सबसे ज़्यादा, देन सी एल टू, देन सी ए बी आर टू, देन सी ए आई टू. क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी इज एब्जॉर्ब. आंसर होगा बी. एफ माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन देंगे तो एफ टू माइनस होंगे. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे. यहाँ पे कर रहा है आर मेजर प्रोडक्ट क्या यहाँ पे होगा. ओके, इस रिएक्शंस में तो आंसर हमारा होगा सी पैरा ब्रोमो एनिली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एडिशन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर टू वाटर बॉडीज बिकॉज. आंसर ये होगा इन्हांस्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी. Question number 37, which one of the following statements is not true? Answer B. Answer will be D. Natural rubber has a trans configuration at every double bond. Next question number 38, the oxidation state of sulfur atom in Carroll and Marshall acids are. Answer होगा A +6 and +6. Question number 39, the process used for the removal of hardness of water is. Answer A Calgon. Calgon is sodium hexametaphosphate is used to remove permanent hardness of water. Question number 40, ethyl amine is heated with CH2 in the presence of AgCl2. The product formed is. Answer होगा D ethyl isothiocyanate. Question number 41, Na2H2O3.5H2O is used in photographic too. Answer होगा C remove undecomposed AgBr as a soluble complex, and this is our explanation. Question number 42, in the freezing point of 0.01 molar aqueous solution of a cobalt 3 chloride ammonia complex which behaves as a strong electrolyte is a minus 0.0558 degrees Celsius. The number of chlorides in the coordination sphere of the complex is Kf water equal to 1.86 Kelvin kg per mole. आंसर बी होगा 1. और ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन 43 देखते हैं. यहाँ पे कह रहा है ट्रांक्विलाइजर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ. आंसर होगा सी मेंटल डिजीज. और जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट तरीके से पूछ चुका है. क्वेश्चन नंबर 44, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विल बी फेवर्ड मोस्ट. आंसर होगा सी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. और ये रहा एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 45, periodic acid splits glucose and fructose into formaldehyde and formic acid. Ratio of moles of formic acid in glucose and fructose. आंसर होगा B 5:3. and this is our explanation. ओके, तो हमारे सारे रहे केमिस्ट्री क्वेश्चन. इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना. आते हैं फिजिक्स पे. क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट absorbs a photon which excites in to n equal to 4 state. The frequency of the photon is. आंसर होगा A 3.1 into 10 to power 15 हर्ट्ज. ये रहा है सारे एक्सप्लेनेशन. ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम
moving at a speed of 20 meter per second. Answer will be B, 2.8 into 10 to power minus 34 meter, and this is our explanation. Lambda is equal to h by mv. Question number 3. A small ball of mass, a small m, is released from rest from the position shown. All contact surfaces are smooth. The speed of the ball when it reaches its lowest position is, answer will be B, under root 4 gr by 3, and this is our explanation. Question number 4. The angle between vector A and B is 60 degree. What will the ratio of A dot B and A cross B? Answer will be B, 1 by under root 3, and this is our explanation. Question number 5. For a particle moving along a circular path, the radial acceleration AR is proportional to time t. If AT is the tangential acceleration, then which of the following will be independent of the time t? Answer will be D, AR into AT का whole square. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पे कह रहा है मेटालिक सेल हैज अ पॉइंट चार्ज क्यूब kept inside its cavity. Which one of the following diagrams correctly represents the electric field lines? आंसर हमारा सी होगा और ये रहा एक्सप्लेनेशन. Question number 7. An electric bulb rated for 500 watt at 100 volt is used in a circuit having a 100 volt supply. The resistance R that must be put in series with the bulb so that the bulb is drawn 500 watt is, answer B, 20 ohm, and this is our explanation. Question number 8. An electric current is passed through a circuit containing two wires of the same material connected in parallel. If the lengths and radii of the wires are in the ratio of 4 by 3 and 2 by 3, then the ratio of the currents passing through the wire will be, answer will be D, 1 by 3. This is our explanation. Question number 9. A step down transformer is used on 1000 volt line to deliver 20 ampere at 120 volt at the secondary coil. If the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn from the line is, answer A, 3 ampere, and this is our explanation. Question number 10. A charge of magnitude 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb is moving in a circle of radius 5 centimeter in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. After applying E equal to 0.15 volt per meter, charge starts moving in a straight line. Mass of charge will be, answer will be B, 4 by 3 into 10 to the minus 20 kilojoule, and this is our explanation. Question number 11. A charge capital Q is divided into two charges, Q and Q minus small q. The charge of small q such that the force between them is maximum is, answer C, Q by 2, and this is our explanation. Okay. Next, question number 12. In the given statement, given system, a capacitor of plate area A is charged up to charge Q. The mass of each plate is M2. The lower plate of rigidly fixed. Find the value of M1 so that the system is in equilibrium. Answer होगा यहाँ पे C, Q is by 2 A epsilon naught G plus M2. Okay, and this is our explanation. Question number 13. A car is standing 200 meters behind a bus which is also at rest. The two start moving at the same instant but with different forward accelerations. The bus has acceleration 2 meters per second square and the car has acceleration 4 meters per second square. The car will catch up with the bus after time. Answer होगा D, 10 root 2 second. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. यहाँ पे कह रहा है टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m and 5m and radii r and 2 are respectively are released in free space with initial separation between their centers equal to 12 r. If they attract each other due to gravitational force only, the distance covered by the smaller body just before collision is, answer D, 7.5 r, and this is our explanation. Okay. Next, question number 15. A mass m is raised from a distance 2r from the surface of the earth is 3r. Work done to do so against gravity will be, answer C, mgr by 12, and this is our explanation. Next, question number 16. Three capacitors each of capacitance C equal to 2 microfarad are connected with a battery of EMF 30 volt as shown in the figure. When the switch S is closed, the heat generated in the circuit will be, answer over B, 0.30 millijoule, and this is our explanation. Question number
17. Two identical objects A and B are at temperature T and TB respectively. Both objects are placed in a room with perfectly absorbing walls maintained at a temperature T is more than T and T is more than TB. The object A and B attain the temperature T eventually. Select the correct statement from the following. Answer will be B. A loses more heat by radiation than it absorbs, while B absorbs more radiation that it emits until they attain the temperature T. And this is our explanation. Question number 18. The temperature of source of a Carnot engine of efficiency 20% when the heat exhausted is at 240 Kelvin is answer D 300 Kelvin, and this is our explanation. Next question number 19. A smooth vertical tube having two different cross section is open from both the ends but closed by two sliding pistons as shown in the diagram and tied with an inextensible string. 1 mole of an ideal gas at pressure P is enclosed between the piston. The difference in the cross-sectional areas of the two pistons is given by delta S. The mass of the piston are M1 and M2 for larger and smaller one respectively. Find the temperature by which the tube is raised so that the piston will be displaced by a distance L. Take atmospheric pressure equal to P naught. Answer will be A. T2 minus T1 equal to P L delta S by R, and this is our explanation. Question number 20. If the electric lines of force are shaped like arcs of concentric circle with their center at point O in a certain section of an electric field, then answer हमारा A होगा. The intensity of the field in this section should at each point be inversely proportional to its distance from point O, and this is our explanation. Okay. Next question number 21. Two long wires carrying current are kept crossed, not joined at O. The locus where magnetic field is 0 is. तो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो ए होगा. I1 equal to x by y by I2, and this is our explanation. Question number 22. A body is thrown vertically upwards. Which one of the following correctly represents the velocity v as time t? Answer will be D, and this is our explanation. Question number 23. A man wants to swim across a river by width 200 meters along the shortest path. If the speed of river stream is 3 km per hour and the speed of swimmer is still water is 5 km per hour, then the time of crossing the river is answer C 3 minutes, and this is our explanation. Next question number 24. The figure below shows an X with which has a massless handle of length L and a blade of mass capital M and radius R. The man slowly raises the X from the horizontal piston to the vertical position by rotating it about its point B. Find the work done by him on the X during the process, and the answer will be A mg into L plus R plus 4R by 3 pi, and this is our explanation. Question number 25. A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. If the acceleration of the truck is 5 meter per second square, the frictional force acting on the block is answer will be A 5 Newton, and this is our explanation. Question number 26. Two radioactive materials X1 and X2 have decay constant 10 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of X1 to that of X2 will be A1 by E after a time. Answer will be D 1 by 9 lambda, and this is our explanation. Question number 27. The atomic mass of N157 is 15.000108 mu, and that of O168 is 15.994915 mu. The minimum energy required to remove the least tightly bound proton is mass of proton is 1.007825 mu. Answer will be 12.13 mega electron volt, and this is explanation. Question number 28. The time period of a particle executing SHM is 8 seconds. At t equal to 0, it is at the mean position. The ratio of the distance covered by the particle in the first second to the second second is answer will be D under root 2 plus 1, and this is our explanation. Okay. Next question number 29. A pendulum has maximum kinetic energy K1
If its length is doubled, keeping an amplitude same, the maximum kinetic energy becomes K2. Then relation between K1 and K2 is answer will be A. K2 equal to 2K1, and this is our explanation. Next question number 20, 30. Moving with the same velocity, which of the following has the longest de Broglie wavelength? Answer will be A. Beta particle, and this is our explanation. Beta particle is an electron. Since electron has the smallest mass, its de Broglie wavelength is the longest, as the velocity of particle is the same. Question number 31. According to Einstein's photoelectric equation, the plot of kinetic energy of the emitted photoelectrons from a metal versus the frequency of the incident radiation gives a straight line whose slope जो है आंसर होगा D is the same for all metals and is independent of the intensity of the radiation. Okay, and this is our explanation. Okay, next question number 32. A cubical block of size 0.5 meter floats on water with 30% of its volume under water. What is the maximum weight that can be put on the block without fully submerging it under water? Take density of water equal to 10.3 kg per meter cube. Answer A 87.5 kg, and this is our explanation. Question number 33. 32 grams of O2 is contained in a cubical container of size 1 meter and maintained at a temperature of 127 degrees Celsius. The isothermal bulk modulus of elasticity of the gas is in terms of universal gas constant R is answer will be 400 R, and this is our explanation. Question number 34. An astronomical telescope has an angular magnification of magnitude 5 for an object. The separation between the objective and the eyepiece is 36 centimeter. The final image is formed at infinity. The focal length f0 of the objective and fe of the eyepiece are answer was D 30 centimeter and 6 centimeter, and this is our explanation. 35. A thin rod of 5 centimeter length is kept along the axis of concave mirror of 10 centimeter focal length such that its image is real and magnified, and one end touches the rod. This magnification will be answer B2, and this is our explanation. Next question number 36. A solid sphere of mass capital M and the radius r is pulled by a force F as shown in the figure. If the sphere does not slip over the surface, then frictional force acting on the sphere is answer होगा B 3F by 7, and this is our explanation. Question number 37. The moment of inertia of a uniform semicircular disk about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane is मास ऑफ जो दिस कैपिटल एम है जैसे आर है यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ आंसर होगा बी एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल एम 4 आर बाई 3 पाई का स्क्वायर। आंसर यहाँ हमारा होगा बी और ए रहा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. The energy band gap is maximum in SSC insulators. The energy band gap is maximum in insulator. Question number 40. The output Y of the combination of the logic gates shown in the is equal to answer A, यहाँ पे A होगा, A रहा हमारा explanation. Next question number 40. PV graph for a cyclic process is shown in the figure. Work done is given by answer हमारा होगा D 2 pi P naught V naught, और A रहा explanation. Next question number 41. A resistor of 4 kilo ohm with tolerance 10% is connected in parallel with the resistor of 6 kilo ohm with tolerance 10%. The tolerance of the parallel combination is nearly answer होगा C 30%, और ये रहा हमारा explanation. Question number 42. A single slit of width 0.1 millimeter is illuminated by parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom, and diffraction bands are observed on a screen 0.5 meter from the slit. The distance of the third dark band from the central bright band is answer A 9 millimeter, and this is our explanation by MTA. Next question 43. In Young's double slit experiment, the distance between slits and the screen is 1 meter, and monochromatic light of wavelength 600 nanometer is being used. A person standing near slits is looking at a fringe pattern. When the separation between the slits is varied, the interference pattern disappears for a particular distance d naught between the slits. If the angular resolution of the eye is 1 by 60 degree, then the value of d naught is close to ऐसा हमारा सी होगा 2 millimeter, and this is our explanation. Question number 44. A set of 56 tuning forks are arranged in a series of increasing frequencies.
If each fork gives 4 bits with preceding one and the frequency of the last is twice than that of first, then frequency of the first fork is answer होगा B 220 Hz and this is our explanation. क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ पे है फिजिक्स का. A segment of wire vibrates with a fundamental frequency of 450 Hz under a tension of 90 kilogram weight. Then tension of at which the fundamental frequency of same wire becomes 900 Hz is answer A 36 kilogram weight and this is our explanation. Fundamental frequency of wire equal to 1 by 2 pi m root T by m. ओके, ये थे हमारे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स क्विक रिव्यू के लिए. एनटीए अभ्यास के सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. ओके, आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके ले सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.